students, welcome to the biology class of StudyGist. Today we will continue with the chapter Heredity and Evolution, and in this class the topics which will be discussed, these are firstly how are the characteristics or the traits these are transmitted to the progeny, then how do the genes control the characteristics, and how are the blood groups inherited, next about the sex determination, how this is determined, and lastly about two types of trait, that's the inherited trait and the acquired trait. But before we proceed, I want to remind you about our social media platforms like our YouTube channel StudyGist Academy. Do subscribe our channel, like our Facebook page, join our Telegram channel. The link is provided here, and the name of the channel you can see, StudyGist School 7 to 10. It looks like this. In this channel you will be getting each and every updates about the live classes and the study materials before time. Follow us on Instagram, join us through the WhatsApp community. The number is provided here, note it down and join now. For more updates, do visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our app of StudyGist is freely available and it looks like this. It's a very user-friendly app, and through this app the live classes are being conducted. Apart from the live classes, the recorded classes, the study materials, as well as the important notes you will be getting. This is available. So do download this app and install it now. This is how our YouTube channel looks like. So after subscribing our channel, don't forget to hit the bell notification. Keep this notification on to get instant updates whenever any new videos will be uploaded in our channel. And this is how our Facebook page looks like. So like us on Facebook too, to be united with us continuously. Let's get started. The first topic of discussion of today's class is how the characteristics or the traits are different forms of characteristics, right? So ये characteristics और traits जो है वो कैसे progeny में transmitted होता है, ये we have to discuss. Before we start that, we have to have the basic clear idea about the genes which I have discussed. So we have to remember that all the characteristics or traits are transferred by the help of gene or through the genes. Genes are responsible for the characteristic features or the traits of an organism. Plant, it may be animals also, any kind of organism, plant, animal. Wherever the characters are transmitted, it will be transmitted with the help of genes only, right? The characteristics or the traits of the parents are transmitted to their progeny or the offspring, means the next generation. Progeny means I am talking about the next generation offsprings, right? Through the genes present, which are present on their chromosome, right? So on the chromosome, the genes are present like this. Suppose this I am numbering X, Y, Z. Okay. So these genes are present on the chromosomes, and when they are transferred during their sexual reproduction. And how it occurs? We all know that gene occurs in pairs. Gene जो है वो हमेशा पेयर में रहता है, और एक पेयर का एक कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का एलील कहा जाता है, right? Now there is a pair of genes for each characteristic of an organism. इसीलिए ह्यूमन में, in case of human beings, how many number of chromosomes are present? It's 23 pairs. 23 pairs equal to 46. 46 chromosome present रहता है, लेकिन 23 types, मतलब एक ही character के लिए, एक ही characteristics और एक ही trait को represent करने के लिए कितना chromosome रहता है? 2 chromosome रहता है. So that's why it's written that there is a pair of genes responsible which is responsible for each and expressing each and every characteristics of the organisms, and one is the dominant gene and the other is the recessive gene. Dominant gene is expressed and recessive gene is suppressed by the action or presence of the dominant gene with it. Now each parent possesses a pair of genes for each characteristics on a pair of chromosomes. However, what happens? Each parent, हर एक parent pass करता है क्या? एक gene. From this pair, only one gene gets transferred. Okay,
where? To the progeny, to the gametes of the progeny. नेक्स्ट जनरेशन का या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का जो गैमेट है उसमें थ्रू द गैमेट्स इसमें ट्रांसफर होता है. ओनली फ्रॉम दिस पेयर ऑफ जीन्स ओनली one is transferred to the offspring from the parent, from each and every parent. So this is one parent, this is one parent, so this is also transferred to the progeny, this is also transferred, so the progeny is ultimately having this gene. Okay, accordingly the characters will be determined. In this way the male gamete and the female gamete carry one gene for each characteristic from the gene pair. So एक यहाँ से आया one parent से, एक दूसरे पेरेंट से आया, ये क्या बन गया? दिस इज वन जीन पेयर, राइट? दिस इज वन जीन पेयर. नाउ दीज आर लोकेटेड ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट व्हेन द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स, तब क्या हो जाता है? तब हो जाता है फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और द जाइगोट विद अ फुल सेट ऑफ जीन्स. जब अलग अलग रहता है, जब गैमेट रहता है, तब ये क्या रहता है? इन द गैमेट कंडीशन इट रिमेन्स एज हैप्लॉइड. लेकिन जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, तब ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, एंड देन it becomes diploid by nature. Now this zygote grows and develops to form a new organism having the characteristics or traits from both the parents which it has inherited through the genes. This is to be remembered. The one point we must have to remember, that though the progeny inherits two genes for each trait from its parents, but the trait shown by the progeny depends on which inherited gene is dominant of the two. मतलब दोनों parent है, suppose two parents are there, suppose P1 and P2, और यहाँ से जो gene transfer हो रहा है, suppose this gene, and here this gene, and the offspring is suppose carrying this gene, right? So ये offspring जो है वो कौन सा character को express करेगा, that will be dependent on the inheritance of the gene. मतलब ये inherit होके यहाँ से capital T आया, इस parent से आया small t, तो it depends कि जो offspring होगा, offspring में कौन सा एलील जो है वो ट्रांसफर हुआ है, कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ है, एंड विच फॉर्म इज ट्रांसफर, विच फॉर्म इज इनहेरिटेड, वेदर इट्स अ डोमिनेंट वन और द रिसेसिव वन. जो डोमिनेंट है उसी के हिसाब से इट विल बी एक्सप्रेस. अदरवाइज ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि पेरेंट 2 का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपिटल टी, दिस जीन. ओके, so for example, if a pea plant progeny inherits the gene for the tallness, that is T, from one parent, and the gene for dwarfness or short, that is the small t represented by small t, from the other parent, then it will show the trait or of the tallness and become a tall plant. As you can see here, this will represent the tall plant, right? इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेरेंट 2 में जो स्मॉल टी था, दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, राइट? दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट. सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट in an inactive manner, suppressed manner by the presence of dominant gene, and it becomes tall plant because tall plant is dominant here over the gene which is responsible for dwarfness. Clear? So although the gene for the dwarfness जो कि small t है, this is present in all the cells in the hybrid plant. ये hybrid condition में जहाँ पर दोनों एलील्स रहते हैं एक जीन पेयर में, हाइब्रिड प्लांट में ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट नहीं है. yes, definitely it is present, but it does not show its effect due to the dominance. If both the parents pass one copy each of the recessive gene for dwarfness, making it genotype TT, then the traits of dwarfness will be expressed in the progeny plant. मतलब दोनों parents, suppose this is one parent and
दिस इज सपोज अनदर पेरेंट. सो यहाँ से बहुत सारे प्रोजेनी में से जिस प्रोजेनी में ये कंडीशन रहेगा, मतलब दोनों ही रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट रहेगा, तब no one is coming here to interfere the recessive, which one dominant, which one recessive. Here the recessive term is invalid. यहाँ पर recessive कुछ है ही नहीं, दोनों सेम है, मतलब कोई किसी का जो एक्सप्रेशन है उसको नहीं रोकेगा. तो in this way, this small t, this condition is free to express its own characters in the progeny. Next is, how do the genes control the characteristics or the traits? See, a gene is what? Gene is a section, is a part of DNA, is a segment of DNA, right? This is DNA, and suppose this is one segment of DNA, that is called the gene, right? And it codes for the formation of a protein which controls a specific characteristic of the organism. तो ये जो जीन है, ये एक बाद में आप in higher classes will get to know that one gene codes for one particular protein, initial form of protein, that's the amino acid. So in that case, suppose think about a plant progeny, one offspring, okay, has a gene for the characteristics called tallness. उसमें tallness का gene present है. Now the gene for the tallness will give instruction to the plant cell to make a lot of plant growth hormones. Definitely उसमें tallness का gene है, मतलब वो जो message भेजेगा, the message will be for the formation of plant, more amount of plant growth hormones, plant growth regulator, जो plant growth के लिए help करता है, वो सब hormone को ज़्यादा से ज़्यादा produce करे inside the plant body. The message will be given. And due to the formation of excess of the plant growth hormone, the plant will grow too much and hence will become tall. जितना हाइट रहना चाहिए, ये मैसेज की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और ये ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, राइट? और on the other hand, what will happen if the plant has the gene for the dwarf gene, then the less plant growth regulators, plant growth hormones will produce. In this way क्या होगा, due to which the plant will grow less and remain short, and in this way it will form a dwarf size plant. It will form a dwarf plant. Just like the plant, if we talk about the animals, we will see that in case of animals also, these are transmitted from the parents through the genes only by the process of sexual reproduction. So for example, if we think about the transmission of color, hair color, from the parents to the parents means either mother from father or both, then it is it is transmitted to the child. So before we do that, we have to keep in mind that the black hair, here the instruction is given कि black hair जो है, that's the phenotype produced by the capital H and capital H small h. That means the black hair, that is the dominant gene, dominant one, and pale yellow hair, that is the blonde hair, that is the recessive one. तो ये कैपिटल H और कैपिटल H स्मॉल h, here as ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल H है, दैट इज अ डोमिनेंट, तो ये स्मॉल h का जो ब्लॉन्ड कलर है, हेयर कलर जो ब्लॉन्ड कलर है, वो इस कंडीशन पे, ये जीन जिसमें रहेगा उस इंडिविजुअल पे ब्लैक कलर ही दिखेगा, ओके. एंड ऑन द अदर हैंड, द ब्लॉन्ड हेयर कलर और द पेल येलो कलर ऑफ द hair is a phenotype which is produced by the genotype small h. This is the condition. Now see, this is the black hair. It is represented as capital H, and this is capital H, small h. So ये capital H और capital H small h, ये दोनों ही क्या हो गया, black, और ये हो गया blonde. So a mother has, suppose in that case, father or mother, any one parent is having black hair and another parent is having blonde hair, okay. So the child will, what will it have? It will have the black hair as it is the dominant, okay. So this can be explained on the basis of transmission of genes for the hair color. Like mother's cell contain two genes, capital H for black hair, and both the genes are means capital H, दोनों ही capital है, मतलब दोनों ही dominant है,
तो मदर कलर, हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, या फिर कोई फादर का कोई भी एक जो कलर है पेरेंट का हेयर कलर दैट इज ब्लैक, और दूसरा जो पेरेंट है वो क्या कर रहा है, उनकी बॉडी में जो जीन है हेयर कलर के लिए दैट इज स्मॉल एज, दैट्स व्हाई he or she is showing the blonde hair color. Now these two genes are recessive, तो इसमें ये pale yellow blonde जो color है that will not be suppressed by anyone, so it will express itself. Okay. Now during the process of reproduction, one parent transmits one dominant gene for the black hair that is capital H, और other जो parents है उससे क्या आ रहा है, small h आ रहा है. Then what is happening? कैपिटल ए स्मॉल एच ये आ गया कहां पर, ऑफस्प्रिंग. तो यहां पर कैपिटल एच जो है वो डोमिनेंट है, इसीलिए दिस कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड एंड द चाइल्ड विल शो ब्लैक हेयर कलर. क्लियर? नाउ विल सी हाउ द ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड. ओके, सो वी नो दैट एक पर्सन में जो 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं दैट आर ए ब्लड ग्रुप, group B, AB and O, right? Now this blood group system is controlled by a gene which has 3 different forms of alleles, symbols which is denoted 3 different forms. जो allele का gene का 3 forms है, जैसे कि IA, IB and IO. These are the 3 forms by which this is presented. Now हम लोगों को क्या मालूम है कि एक जीन में ये 3 एक एलील का, एक जीन का 2 एलील रहता है, राइट? एक जीन का वन जीन, अ जीन इक्वल टू 2 एलील्स डेफिनेटली, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में रहता है, ऑलवेज इन पेयर्स, राइट? वी नो दैट. सो 2 एलील जो है नॉर्मली रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप मेंटेनिंग कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसका 2 नहीं 3 एलील रहता है. 3 एलील कौन कौन सा है? IA, IB and IO. These are the 3 alleles. So 3 alleles present है, but in the blood cell of each and every individual there will be any combination from these 3 alleles, right? So these IA and IB, among these 3 alleles, they show they show no dominance over each other. That means they are equally important, they are equally dominant. So it cannot be said that A will be expressed, B will not be, or B will be expressed, A will not be. So when these are present together, then they are called, this is called co-dominant. दोनों ही dominant है, कोई किसी के सामने recessive या suppressed नहीं रहेगा. Okay? So however, the genes IA and IB both are dominant over the gene IO. IO जो है वो recessive है, तो IA, IB दोनों dominant है. So in other words, we can say the blood group blood gene IO is recessive in relation to the genes IA as well as IB. Now, although there are 3 gene forms or alleles for blood, but any one person can have only 2 of them. जैसे मैंने कहा कि एक जीन में 2 ही एलील रह सकता है कि ये तीनों, तो इसीलिए इन तीनों में से कोई भी 2 इसमें रहेगा. आइदर IA IB रहेगा, या IA IO रहेगा, या IB IO रहेगा, या फिर दोनों ही IA IA रहेगा. फॉर एनी कॉम्बिनेशन दे कैन एग्जिस्ट, बट तीनों एक साथ नहीं रहेगा क्योंकि जीन में तीनों नहीं रह सकता है. ओके, सो इफ द जेनोटाइप इज IA IA, then the blood group will be what? A. And if the genotype is IA IO, then ये IO तो express होगा नहीं, तो what will be expressed? IA. Same case for it will be for IB IB. तो IB IB जब रहेगा इसका मतलब ब्लड ग्रुप होगा B. अब जब IB IO रहेगा तो IO IB से suppressed हो जाएगा. IB recessive, IB is dominant and IO is recessive. So IB मतलब B ब्लड ग्रुप रहेगा. Okay? If the genotype is IB IA और IA IB, मतलब ये दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है, तो ये दोनों में क्या होगा? दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेगा. सो द ब्लड ग्रुप विल बी AB. और मान लीजिए अगर IO IO है तो इसमें ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसका O. मीन्स नथिंग इज डोमिनेंट, एवरीवन इज, इन दिस केस द 2 alleles are recessive allele. Now one problem is there where a man who is having his blood group A marries a woman having blood group O.
and they have a child, then what will be the blood group of the child or the progeny or the offspring? तब क्या होगा? See, when a person which is having blood group A, तो उसका genotype क्या हो सकता है? IA हो सकता है. So in this case, the genotype of man's blood is IA and that of the woman's blood जिससे वो शादी कर रहा है, okay, getting married, so that blood group will be is IO. O ब्लड ग्रुप है मतलब क्या? कोई भी डोमिनेंट कुछ है नहीं. अभी मैंने कहा IO मीन्स इट डिनोट्स द O ब्लड ग्रुप. सो द चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप A, ओके, बिकॉज द IA जीन इज डोमिनेंट. सो दो कंडीशन हो सकता है. IA मान लो, IA, ओके, और क्या हुआ यहाँ पर? IO. क्लियर? सो when a blood group is A has a genotype I, मतलब दो कंडीशन दिखा रहा है. देखो, जब ये कंडीशन होगा, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन अगर हुआ, क्योंकि ये तो डेफिनेटली दिस विल बी A ब्लड ग्रुप किसी का है, मतलब ये कंडीशन हो सकता है. तब क्या होगा? तब उसका ऑफस्प्रिंग का हो जाएगा IO. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. बट इफ द फादर, द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर A ही रहेगा, ये कंडीशन भी तो A ब्लड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि IO जो है दैट इज रिसेसिव एंड दैट इज सप्रेस्ड बाय दिस. सो ये भी A ब्लड ग्रुप को ही डिनोट कर रहा है. तो इन दैट केस ये अगर रहा IO ऐसे अगर रहा और इसके साथ मैरी हो रहा है IO, तो इसमें इसका क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा? IO. This is the condition, right? Hence the genotype of the man's blood is IAIO and the woman's blood is IO. So due to this, there is an equal chance of the child of acquiring blood group A as well as blood group O. तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन हो गया तो IO हो सकता है, IO हो सकता है. तो मतलब जो ब्लड ग्रुप रहेगा चाइल्ड का वो A भी हो सकता है इक्वल इम्पोर्टेंस और O भी हो सकता है. ये दोनों पॉसिबिलिटीज है. ओके, नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. जस्ट एज द ब्लड ग्रुप वी हैव डिस्कस्ड कि वो कैसे पेरेंट्स से लेके चाइल्ड तक जाता है, वैसे ही जो सेक्स जो कैन बी डिटरमाइंड, ये भी जो है सेक्स रिप्रेजेंटेटिव जो जीन है वो भी इनहेरिट होता है बाय द सेम वे, बाय द हेल्प ऑफ जीन्स ओनली. ओके, जो सेक्स और क्रोमोसोम्स है जो फीमेल के लिए है वो दो एक्स क्रोमोसोम रहता है इन केस ऑफ फीमेल. ओके, एंड इन केस ऑफ मेल एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम रहता है. सो अ पर्सन कैन हैव a male sex or a female sex. So the process by which the sex of a person is determined is called the sex determination. जिस process से एक person का जो sex है वो determined होता है, that is called the sex determination. Clear? Now genetics is basically involved in this process. So this is the X chromosome and the small one is the Y chromosome. The chromosomes which determine the sex of a person, these are called the sex chromosome. मतलब ये X chromosome और Y chromosome को क्या कहा जाता है? Sex chromosomes. तो मेल में क्या होता है, इसमें एक X रहता है एक Y रहता है. So the condition is XY. This means कि half of the male gametes or the sperms, male gametes from sperms will have X chromosomes and half of the will have the Y chromosomes. Clear? अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही X है. Clear? So it has two X chromosomes but no Y chromosome. दोनों ही ये X chromosome है, Y chromosome फीमेल में absent रहता है. Clear? Now suppose if a sperm, देखो फीमेल कंडीशन दोनों सेम है और मेल कंडीशन में देखो X is larger and Y is smaller chromosome और यहाँ पर दोनों सेम है. तो इफ अ स्पर्म यानी कि मेल गैमेट जो है दैट्स कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एन ओवम व्हिच कैरीज एक्स क्रोमोसोम, देन द चाइल्ड विल बी अ गर्ल. मतलब एक मेल पेयर में एक्स वाई दोनों रहता है, ये तो सिर्फ एक्स ही प्रोवाइड कर सकता है. तब ये कंडीशन जब इसका
तो इसमें से X आया और मेल जो है इट्स कंट्रीब्यूटिंग इज X, देन it will become, it will form the XX representation, and that indicates a girl, right? Now if the sperm, suppose Y is being contributed, X रहा यहाँ पर and Y is contributed, जब Y contribute किया जाएगा Y को, या Y will be contributed, then it will form XY, and that will be a male or a boy. Clear? Now next is acquired trait and inherited trait. So what is acquired trait? A trait of an organism which is not inherited, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन के थ्रू नहीं पहुंचता है, नहीं जाता है या नहीं ट्रांसमिट होता है, बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट जैसा है उसके हिसाब से जो है वो कैरेक्टर्स को अडेप्ट करता है. दैट ट्रेट और दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द एक्वायर्ड ट्रेट. एक्वायर कर रहा है environmental, on the basis of ever changing environmental condition, they are the traits. Some traits are being acquired by particular organism. Those traits are called acquired trait. तो example लेते हैं, if a beetle doesn't get sufficient food for a considerable amount of time, बहुत टाइम से एक beetle को मान लो food नहीं मिला है, कोई खाना नहीं मिला है, its weight will be reduced to starvation. weight जो है वो reduce हो जाएगा, कम हो जाएगा, और it will have to go for starvation, right? The low weight of this beetle is an acquired trait of the beetle which has been acquired in response to the environment which contained insufficient food. Clear? तो ये जो low weight हो गया है due to long time starvation, this is one acquired trait. तो ये पहले से तो नहीं था, खाना नहीं मिला, this one environmental और outer extrinsic factor जिसकी वजह से वेट लॉस हुआ है, वेट बहुत कम हो गया है, तो दिस इज द एक्वायर्ड ट्रेट, दिस इज नॉट द इनहेरिटेड वन. अगेन इफ वी टेक अनदर एग्जांपल लाइक द टेल ऑफ अ माउस सपोज गेट्स कट ड्यू टू एनी रीजन, then the cut tail of this mouse is also one acquired trait which has been brought about by some agents in its environment. So ऐसे होने से ये एक्वायर्ड ट्रेट हो गया. उसके बाद से कट ऑफ द माउस विद द कट ऑफ टेल ओनली, दैट विल बी रिप्रोड्यूस्ड. So the acquired trait of organism cannot be passed on to their future generations or their progenies. ये सिर्फ उस जनरेशन के लिए ही है, जिस जनरेशन में environmental condition जैसा है उस हिसाब से acquired trait will be acquired. So only those traits can be transmitted to the future generation in which the changes have occurred in the gene. जो changes gene में already permanently बस जाता है, occur हो जाता है, okay? Only those characters can be transmitted. So the changes in the non-reproductive body cells of an organism cannot be inherited by the offspring. तो जो changes जो है, इनहेरिटेबल चेंजेस जो है, जो रिप्रोडक्टिव, अगर नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल में होता है तो वो इनहेरिट नहीं होता है. अगर रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल में सेल के जीन में कोई चेंजेस हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी ट्रांसमिटेड और इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बट इफ द change is occurring in the non-reproductive body cells, then there is no chance for the inheritance. Okay, so for example, like when the weight of a beetle is reduced too much due to starvation, then there is a change in the normal body cells of the beetle, but no change takes place in the genes. तो ये body structure जो है उस generation की, जब खाना नहीं मिला तब जो है starvation के लिए, due to starvation body weight जो है वो कम हो गया. Even if in the next generation or after a few generation, if the food availability is sufficient, then the losing of weight, this feature, this trait won't be found. So इससे ये पता चलता है कि that is the acquired trait and this is not anywhere related to inherited traits. So a trait of an organism which is caused by a change in its genes
is called inherited trait. जो जीन के थ्रू जो changes होता है, that is the inherited trait, and this can be passed to the progeny of an organism because they have produced the changes in their genes or their internal composition of the DNA. Suppose there is a population of the red beetles in the green bushes. Again, suppose that a red colored that a color variation arises during the reproduction, so that there is one beetle which is green in color, okay, instead of red. So first condition is, suppose this is first condition, there are some beetles are there, I am drawing 4 beetles suppose, okay. So this is a population of red beetles, this is the red color beetles. Red color beetles are there in the green bushes. Again, in another condition, this is the second condition, where a color variation arises during the reproduction where one is the green. So यहाँ पर 4 था, 4 ही रहेगा, 3 is red and 1 is suppose green. I am making the dots here, okay. In this way it's being differentiated. This change of green color in the beetle has been brought about by a change in the genes of the reproductive cells. ये reproduction की वजह से हुआ है, and the green color of this beetle is an inherited trait. ये मतलब heredity से आया है, एक generation से दूसरे generation के through आया है, and the change of the red beetle to green can be considered as an example of evolution. ये evolution हो गया है कि red से वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, एज इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल. मतलब ये ग्रीन बुश के अंदर अगर ये अडेप्ट करके ये इसमें ये इनहेरिटेंस से ये चेंज आ गया है जीन में कि वो रेड कलर का ना होके उसका बॉडी कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ताकि वो ना दिखे, एंड इट कैन बी अ गुड सर्वाइवल फैक्टर फॉर देम. ओके, सो दिस एक्चुअली द इनहेरिटेड ट्रेट्स, it means the characteristics which we receive from our parents. Okay, so this is all about today. In the next class, the rest of the topics will be discussed. Thank you.